Hello and welcome to Northeast Tonight, the show that decodes the region. Exactly a week from now, 80 lakh of Assam's 2.34 crore voters are to cast their votes in the first phase of elections to 47 of the 126 assembly seats. The battle is primarily going to be between the BJP and the AGP on one side and the Congress on the other. The tug of war by the two opposing political combinations will be over the considerable T community voters. Which side would they vote? The T tribe community were once Congress supporters, but the BJP has since made massive inroads into the T belt. The campaign reached a crescendo in the past 48 hours with Assam BJP's poll mascot Dr. Himanta Biswa Sharma filing his nominations yesterday for his traditional Jalukbari seat in presence of thousands of his loyal supporters, besides leaders from the party, the allies, and leaders from the neighboring states like Chief Minister Biren Singh of Manipur. On the other hand, Congress leader Rahul Gandhi toured Assam and made attempts to strike a chord with the youth and the T community. Of course, Prime Minister Narendra Modi also toured Assam today, making it the biggest face-off on a single day as far as this election campaign is concerned. Now, first of all, how much will Rahul Gandhi's rhetoric cut ice among the people, for instance, when he said, "Fight with love, not with lathis in an upper and dig at the RSS"? The question is, can the opposition neutralize the massive BJP campaign push led by none other than Prime Minister Narendra Modi and Dr. Himanta Biswa Sharma? Many are asking the question whether the Congress has given walkover to several BJP candidates by fielding relatively weak candidates in election parlance. Can the tie-up with the AIUDF help Congress consolidate its tally this time? To discuss the possibilities, I am joined by Assam BJP spokesperson Pramod Swami. Assam Congress spokesperson Dr. Juri Sarma Bodolo is also with me. Joining me from Borkhetri, joining me actually from Mukalmua, is the AIUDF spokesman Champak Kalita, who is of course the candidate for the Borkhetri seat. With me also is Dr. Rajiv Handik and Dr. Vikas Tripathi, both professors at Guwahati University and well-known commentators. And of course, we will also likely to have soon joined by Ahom Jatiyo Parikhod President, Mr. Lurin Jyoti Gogoi. Ladies and gentlemen, welcome to Northeast Tonight. Before we begin the discussion, today, viewers, was the biggest face-off was seen in Assam election theatre with none other than Prime Minister Narendra Modi addressing massive rallies and Congress leader Rahul Gandhi also addressing rallies, and later in Guwahati released his party manifesto and made some very interesting. We will listen to the views of these two leaders soon. But now I am joined from Duliajan by Ahom Jatiyo Parikhod President, Mr. Lurin Jyoti Gogoi. Let's go directly to Lurin Jyoti Gogoi, who is in the middle of his campaign, but let's talk to Lurin Jyoti Gogoi. Lurin Jyoti Gogoi, apunak swagatam janaisu. Lurin Jyoti Gogoi, swagatam janaisu. মোৰ বেছি সময় নলওঁ, মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন, আপোনাৰ কিবা ৰিগ্ৰেট আছে নেকি যে আপোনাৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ আপোনালোকে কৈ আছে যে আপোনালোকৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে কি ধৰণে বিজেপিক আপোনালোকে বিজেপিৰ এডভান্সটো কি ধৰণে আপোনালোকে ৰুট কৰিব পাৰিব, কি ধৰণে হল্ট কৰিব পাৰিব? মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, আপোনাৰ কিবা ৰিগ্ৰেট আছে নেকি যে অসম জাতীয় পৰিষদ বিগাৰ এণ্টি বিজেপি ফ'ৰ যিটো মহাজোঁটৰ এটা অংশ নহয়, আপোনাৰ কিবা ৰিগ্ৰেট আছে নেকি? নাই, কেতিয়াও নাই। কাৰণ মই আগতে কৈছোঁ যে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত কোনো আদৰ্শগত চৰিত্ৰগত পাৰ্থক্য নাই। কাৰণ বিদেশী সমস্যাৰ যিটো আমাৰ অসমৰ মূল সমস্যা বা এইবোৰৰ সম্পৰ্কত কংগ্ৰেছৰ দৃষ্টিভংগীৰ লগত বিজেপিৰ বৰ বেছি পাৰ্থক্য নাই। 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰলৈকে অহা বিদেশীক সংস্থাপিত কৰিব লাগে বুলি কংগ্ৰেছে উদ্যোগ লৈছিল। সেইটো তেওঁলোকে এফিডেভিট উচ্চতম ন্যায়ালয়ত জমা কৰিছিল। গতিকে অসমত যদি অসমৰ জনগণৰ স্থায়ী সমাধান লাগে, অসমৰ মানুহৰ আশা আকাংক্ষাবোৰ যদি সঁচাৰ্থত বাস্তৱায়িত কৰিব লাগে, প্ৰতিফলিত কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও বিজেপি দলৰ বিকল্প কেতিয়াও নহয়। আৰু ইতিমধ্যে বিজেপি দলৰ বিকল্প হিচাপে তেওঁলোকে থিয় কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে যদিও কংগ্ৰেছ দলে আচলতে বিজেপি দলটোকে সুযোগ কৰি দিছে। কাৰণ যেতিয়া বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত যেতিয়া চামিল হ'ব,
বদৰুদ্দিন আজমলৰ সাম্প্ৰদায়িক শক্তিটোৰ লগত কংগ্ৰেছৰ যেতিয়া সন্মিলন থাকিব তেতিয়া ডেফিনেটলি ইয়াৰ এডভান্টেজ বিজেপিয়ে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব এতিয়া অসমত এই ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ তেওঁলোকৰ যিটো এজেণ্ডা বা তেওঁলোকৰ ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি বা বিদেশীক লৈ তেওঁলোকৰ কাম কাজ তাৰ বিৰুদ্ধে যদি অসমত সুৰক্ষিত অসম লাগে বা অসমত স্বাভিমানী অসম লাগে বা এই জাতীয় বিষয়সমূহ জাতীয় প্ৰশ্নসমূহত যদি শক্তিশালীভাৱে অসমৰ জনগণৰ পক্ষত থিয় হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে জাতীয়তাবাদৰ কোনো বিকল্প নাই আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে অসম জাতীয় পৰিষদৰ এই জাতীয়তাবাদী ধাৰাটো এই আদৰ্শটোৱে আচলতে সাম্প্ৰদায়িকতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাব পৰা মূল শক্তি হ'ব ওকে এতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ প্ৰশ্নটো হ'ল অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই মোৰ এটা শ্ব'ত কৈছিলে যে আপোনাৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ তেওঁক জন্ম দিওঁতা হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF কি ক'ব নহয় এইটো কথা ৰাইজে বুজি পায় তেওঁৰ কথা বতৰাত কোনো ভিত্তি নাই আৰু তেওঁ সেন্সেশনটো তেওঁ কেৱল মাত্ৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মানে অৰ্থহীন কথা বতৰাৰ যোগেদিয়ে ক'ব পাৰে কাৰণ তেওঁ গোটেই কাৰবাৰটো গোটেই তেওঁ মিছা কথাৰে সেন্সেশন ক্ৰিয়েট কৰিছিলে মাকৰ কথা কৈ এবাৰ শুনি চৰকাৰ এৰিছে তেওঁলোকৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে চকু পানী টুকি গৈ মন্ত্ৰিত্ব এৰি ঘৰলৈ গৈছে মানুহে কেতিয়াও ভবা নাছিলে যে তেওঁ চকু পানীটো মানে মন্ত্ৰিত্ব এৰি অহাৰ কাৰণে এই চকু পানী ভাবিছিলে যে অসমৰ দুখত তেওঁ কান্দিছে পিছত যেতিয়া মন্ত্ৰিত্ব লৈ ঘূৰি গ'ল পুনৰ তেতিয়া বুজি পালে যে তেওঁলোকৰ আচলতে চকু পানীটো আছিল মন্ত্ৰিত্বটোক লৈ মন্ত্ৰিত্বৰ গোটেই বিষয়টোক যে তেওঁলোকে আপোচ কাঢ়িছে আত্মসমৰ্পণকাৰী এটা দল এইটো কথা ৰাইজে বুজিবলৈ বাকী নাই আৰু বিশেষকৈ অতুল বৰা কথাত অসমৰ জনগণে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে কাৰণ তেওঁলোকৰ যিটো চৰিত্ৰ তেওঁলোকৰ যিটো কাম কাজ এইবোৰ কথা ইতিমধ্যে ৰাইজে দেখিলে আৰু এতিয়া এইবাৰ অসমত অসম গণ পৰিষদ নিশ্চিন্ন হৈ যাব এই কথাটো ঠিক কাৰণ ভেজাল জাতীয়তাবাদ অসমৰ ৰাইজে বিচৰা নাই হয় আৰু এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দুটা মুখ্য দল বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ এই দুয়োটা দলেই টি গাৰ্ডেনৰ ভোটাৰখিনিক নিজৰ ফালে আনিবৰ কাৰণে অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰা দেখা গৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে যে তেওঁলোকৰ দল যদি চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে 6 ঘণ্টাৰ ভিতৰতেই টি ৱৰ্কাৰ্ছৰ যিটো ৱেজ সেইটো বঢ়াই দিব আৰু তেওঁ এটা মিনিষ্ট্ৰীৰ কথাও কৈছে টি গাৰ্ডেন কমিউনিটিৰ কাৰণে আপুনি কি ক'ব লুৰিণজ্যোতি গগৈ চাওক এইবোৰ কথাই বিশেষ প্ৰভাৱ নেপেলায় কাৰণ ভাৰতবৰ্ষত আটাইতকৈ বেছি শাসন কৰিছে কংগ্ৰেছে সেই কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত চাহ জনগোষ্ঠীৰ কি অৱস্থা কৰি ৰাখিছিল সকলোৱে জানে চাহ জনগোষ্ঠীৰ সামগ্ৰিক যিটো উন্নয়ন তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড তেওঁলোকৰ শিক্ষা তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য তেওঁলোকৰ বাটপথ তেওঁলোকৰ ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন তেওঁলোকৰ খোৱা পানী বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা এইবোৰ কথা তেওঁলোকক বিদ্যালয় দিয়াৰ কথা আছিল তেওঁলোকৰ মাটিৰ পট্টাৰ কথা আছিল তেওঁলোকৰ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ যিটো পইচা তাৰ ইণ্টাৰেষ্ট কমালে তেওঁলোকৰ যিটো ৰেচন যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ বিবাহ হোৱাৰ আগতে বিবাহ নোহোৱালৈকে ৰেচন আছিল এতিয়া ৰেচন 16 বছৰ 21 বছৰ কাটি দিছে গতিকে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ ৰাইজে দেখি আছে আৰু তেওঁলোকক বিভিন্ন দলে কংগ্ৰেছ বিজেপি দলে বাৰে বাৰে প্ৰতাৰণা কৰি আছে এই কথা দেখিছে গতিকে আমি ভাবোঁ যে এই গোটেই সামগ্ৰিক বিষয়টো যদি আমি সমাধান কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে চাহ জনগোষ্ঠীৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন তেওঁলোকৰ শিক্ষা তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড তেওঁলোকক নতুন এটা বাটেৰে আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব নাও লুৰিণজ্যোতি গগৈ আপুনি দুটা বিধানসভা সমষ্টিত আপুনি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে দুলীয়াজান আৰু নাহৰকটীয়া প্ৰশ্নটো হ'ল আপুনি দুয়োটা চিটতে মাল্টি কৰ্নাৰ্ড কণ্টেষ্ট আপুনি ফেচ কৰিছে আপুনি আশাবাদী নে মই 100% আশাবাদী আৰু মই ইয়াত বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিম এই কথাটো নিশ্চিত নাহৰকটীয়া আৰু দুলীয়াজানবাসী ৰাইজে বিগত সময়ছোৱাত মোক যথেষ্ট মৰম কৰিছিল তেখেতসকলে মোৰ যিটো অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতি মোৰ যিটো দায়বদ্ধতা কাম কাজ এইবোৰক লৈ তেওঁলোকে সদায় মোক আশীৰ্বাদ দি আহিছে আৰু মই ভাবোঁ যে এইবাৰো তেওঁলোকে মোক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰি বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ পঠাব আৰু ৰাইজৰ প্ৰতি সেৱা কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সুযোগ দিব আৰু কি ইস্যু লৈ মুখ্য ইস্যু লৈ আপুনি আপোনাৰ ভোটাৰ ৰাইজক আপুনি এপ্ৰ'চ কৰিছে সব মেজৰ ইস্যু মূলতঃ আমি কাটো অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এই কথাটো আমি অনস্বীকাৰ্য যে কা জাপি দিছে এটা অতি অসাংবিধানিকভাৱে স্বৈৰতান্ত্ৰিকভাৱে গতিকে কাৰ ভয়াৱহতা আৰু তাৰ লগে লগে আৰু অসমৰ সমাজ জীৱনৰ যিবোৰ মৌলিক সমস্যা আছে বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষা তেওঁলোকৰ উন্নয়ন তেওঁলোকৰ সংস্থাপন তেওঁলোকৰ স্বনিয়োজন তাৰ লগে লগে অৰ্থনীতিৰ যিটো ভেটি
বিশেষকৈ ভাঙি কুঙা হৈ পৰিছে এইটো কেনেকৈ উন্নয়ন কৰিব পাৰি সমাজত প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড কেনেকৈ উন্নত কৰিব পাৰি যিবোৰ কথা বিগত সময়ছোৱাত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পাছতো প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিব নোৱাৰিলে আন যিবোৰ মৌলিক বিষয় বিশেষকৈ দুলীয়াজান নাহৰকটীয়া দুয়োটা সমষ্টিতে মই চাৰিওফালে ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজলৈ যাওঁতে দেখিলোঁ যে যিটো তেওঁলোকে কৈ থাকে ৰাস্তা ঘাটৰ তেওঁৰ উন্নয়নৰ কথা ইয়াৰ ফুপুলা স্বৰূপটো মই দেখিবলৈ পালোঁ তাৰ উপৰিও স্বাস্থ্য এটা ডাঙৰ বিষয় যিটো বিষয়ত যথেষ্ট কাম কৰিব লগা আছে তাৰ লগে লগে এইটো কৃষি প্ৰধান অঞ্চল ইয়াত কৃষি অৰ্থনীতি কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি তাৰ লগে লগে উদ্যোগ বিভিন্ন উদ্যোগৰ যিটো অৱস্থা অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ যিটো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতত অৰ্পণ কৰা যিটো পৰিকল্পনা চলিছে ইয়াৰ পৰা মেক্সিমাম অপটিমাম লাভ কেনেকৈ ল'ব পাৰি বা ই কেনেকৈ জাতীয় পুঁজিত সহায় কৰে অসমৰ অৰ্থনীতিত কেনেকৈ প্ৰভূত অৰিহণা আগবঢ়াব পাৰে পেট্ৰলিয়াম ছেক্টৰটোৱে তাৰ লগে লগে টি ইণ্ডাষ্ট্ৰী স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰ্ছ যিসকল আছে যিসকল কাল্টিভেটৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক যিসকল আছে তেওঁলোককো কেনেকৈ তেওঁলোকে পাব লগা প্ৰাপ্য অধিকাৰ পায় চাহৰ দাম পায় বা তেওঁলোকৰ বজাৰৰ কাৰণে সমস্যা নহয় এই সকলো কথা মনত ৰাখি এইবোৰ মূল ইস্যু হিচাপে গণ্য কৰি আমি আগবাঢ়ি যাব খুজিছোঁ মাত্ৰ আৰু দুটা প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিম লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ যিটো কেম্পেইন পুছ কেম্পেইন মমেণ্টাম প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইয়াৰ নেতৃত্ব দিছে অমিত শ্বাহ হোম মিনিষ্টাৰ আহিছে জে.পি. নাড্ডা আহিছে প্ৰভাৱশালী তেওঁলোকৰ নেতা যোগী আদিত্যনাথ আহিছে প্ৰশ্নটো হ'ল আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গোটেই ৰাজ্যখনৰ নুক এণ্ড কৰ্ণাৰ তেওঁ পদযাত্ৰা বা চাইকেল ৰেলী কৰি আছে ইতিমধ্যে কোনোবা দলে এই কেম্পেইন পুছ এই কেম্পেইন মমেণ্টামটো ওচৰ চাপিব পাৰিবনে কেৱল মাত্ৰ হাই প্ৰফাইল যিটো কেম্পেইন এই কেম্পেইনে কেতিয়াও কোনো দলক সহায় নকৰে অসমৰ জনগণৰ যিটো ক্ষোভ তেওঁলোকে বিগত সময়ছোৱাত যিবোৰ অভিজ্ঞতা অত্যাধিক হাৰত মূল্য বৃদ্ধি যিটো হৈছে ই যি কুঙা কৰি পেলাইছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মেটাৰ কৰে তেওঁলোকে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ জীৱন যাত্ৰা কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ গৈছে যিহেতু প্ৰতিটো বস্তুৰ উচ্চ হাৰত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে বিনামূলীয়া চাউল খোৱাৰ পিছত আলু দাইল পিঁয়াজ মিঠাতেলৰ যিটো উচ্চ হাৰত মূল্য বৃদ্ধি গেছৰ দাম যিটো হাৰত বাঢ়িলে পেট্ৰল ডিজেলৰ যিটো হাৰত দাম বাঢ়িলে ঘৰ বন্ধা সামগ্ৰী টিন পাত ইটা বালি চিমেণ্ট শিলগুটি এইবোৰৰ দাম যিটো উচ্চ হাৰত বাঢ়িছে এই সকলো কথাই ৰাইজক কুঙা কৰি পেলাইছে তাৰ লগে লগে তিনিগুণ বাঢ়িলে খাজানাৰ দাম জিএছটিয়ে অসমৰ সমগ্ৰ চাকৰিয়াল ব্যৱসায়িক ভাৰাক্ৰান্ত কৰি পেলাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ ৪৪,০০০ কোটি টকাৰ ঋণৰ বোজা গতিকে এই সকলো কথাই অসমৰ জনগণৰ কেতিয়াও আচলতে এই দলটো বা এই বিজেপি দলটোক কেতিয়াও তেওঁলোকৰ কাম কাজৰ প্ৰতি কেতিয়াও সন্তুষ্ট নহয় সকলো বিতুষ্ট হৈ আছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া মোৰ শেষ প্ৰশ্ন এসপ্তাহৰ পাছত এক্সেক্টলি আফটাৰ 1 উইক প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন হ'ব মাৰ্চৰ ২৭ তাৰিখে ১৬ চনত বিজেপি আৰু তাৰ মিত্ৰজোঁটে তেখেতসকলে ৪৭টা ছিটৰ ভিতৰত ৩৫খন ছিট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আপুনি কি ধৰণে চাইছে ফাৰ্ষ্ট ফেজ অফ ইলেকশ্যনটো য'ত আপুনিও এজন প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ এই ফেজটোৱে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই ফেজটোতে নিৰ্ণয় হ'ব যে অসমৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত কাৰ হাতত গতিকে মই ভাবোঁ যে এইবাৰ জনতাই এটা শক্তিশালী বাৰ্তা দিব আৰু বিশেষত বিগত সময়ছোৱাত বিজেপিৰ যিটো তেওঁলোকৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি আৰু উন্নয়নহীন এটা দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত এটা ব্যৱস্থা এইটোৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে ভোট দিব কংগ্ৰেছৰ AIDFৰ লগত তেওঁলোকৰ মিত্ৰতাৰ সাম্প্ৰদায়িক যিটো এজেণ্ডা তাৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিব আৰু ৰাইজে এইবাৰ সঠিক সময়ত সঠিক সিদ্ধান্ত লৈ বিবেকী যুক্তিপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰে অসমত শক্তিশালী আৰু সুৰক্ষিত জাতীয়তাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে ভোটদান কৰিব বুলি মই হয় লুৰিণজ্যোতি গগৈ অশেষ ধন্যবাদ আপোনাক এই ব্যস্ততাৰ মাজত নৰ্থ ইষ্ট লাইভৰ লগত কথা বতৰা পতাৰ বাবে That was Lurinjyoti Gogoi, the president of Dakham Jatiya Parikhad, talking on. We'll take reactions to that. But today was a day, as I have been saying, it was the biggest face-off that Assam witnessed with the BJP mascot and Prime Minister Mr. Narendra Modi addressing rallies and lashed out at the Congress. And on the other hand, Congress leader Rahul Gandhi also was in Assam on the same day, addressed rallies, of course, in different locations and came down heavily on the BJP. Let's listen in to these top leaders. And I have an eminent panel with me tonight. We will debate. But first of all, let's listen in to these two leaders in their various rallies in the state. हालत ये है कि कांग्रेस आज उन पार्टी के साथ गठबंधन के मैदान में उतरी है
जो खुद असम की अस्मिता, असम की संस्कृति के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा संकट है। कांग्रेस अब असम के लोगों से बहुत दूर हो चुकी है। अभी 2-3 दिन पहले इन लोगों ने श्रीलंका की एक फोटो दिखाई और कहा कि ये असम है। कुछ हफ्ते पहले इन्हीं लोगों ने ताइवान की फोटो दिखाई और कहा कि ये असम है। भाइयों बहनों, गलती एक बार हो सकती है, लेकिन जब गलती दोहराई जाए तो वो गलती नहीं है, प्रवृत्ति बन जाती है, प्रवृत्ति होती है। मुझे ये देखकर तकलीफ हुई कि इस देश की एक ऐसी पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी, जिसने 50-55 साल तक इस देश पे राज किया, ऐसी कांग्रेस पार्टी आज भारत की चाय की पहचान को मिटाने वालों का खुलेआम समर्थन कर रही है। असम के मान सम्मान से, यहां के लाखों टी वर्कर से, उनके जीवन से कांग्रेस का खिलवाड़ करना, ये असम की और हिंदुस्तान की जनता कभी माफ नहीं करेगी। We are very clear that, see, what has the government done? What has the government done? The government at the national level and in Assam and in all BJP run states has essentially destroyed India's biggest strength. India's biggest strength, if you look 5, 10, 12 years ago, our biggest strength was our economy. And that was built by the UPA, by the Congress party, painstakingly, slowly over time. That is why India had jobs, that is why we were growing at 9%. The NDA government has attacked the economic backbone of this country. They have destroyed the economic backbone of this country, right? GST, demonetization, these ideas have destroyed India's ability to produce jobs, have completely disturbed the economic system. Now they have no choice. They have no choice but to go and privatize prime assets of the Indian state. Prime assets of the Assamese people are now going to be privatized by the... देखिए, वो अजमल पे अटैक नहीं कर रहे हैं, वो असम पे अटैक कर रहे हैं। जो असम में जो भाईचारा है, जो आपका कल्चर है, आपकी हिस्ट्री, उस पर अटैक कर रहे हैं और वो रोज उस पर अटैक करते हैं। और ये जो टीम यहाँ बैठी है, असम की रक्षा कर रही है, ये रियलिटी है। हमारे मैनिफेस्टो में 5 गारंटियां हैं, बिल्कुल क्लियर गारंटीज हैं। जो नुकसान बीजेपी ने किया है, सिर्फ असम का नहीं, हर प्रदेश का, देश का, जो नोटबंदी के कारण हुआ है, जो हमारी 2 सरकार के कारण हुआ है, जो गलत जीएसटी के कारण हुआ है, जो 3 किसान के कानून बनाए उसके कारण हुआ है, उसको रेक्टिफाई करने का यह तरीका है। 5 गारंटीज क्लियर कट हैं, असम की जनता को एक बेस देने की, फाउंडेशन देने की। मगर इसका मेन लक्ष्य है कि हम यहाँ असम की संस्कृति, उसकी हिस्ट्री, उसकी कल्चर की रक्षा कर रहे हैं। ये इलेक्शन अजमल का नहीं, ये इलेक्शन असम के बारे में। Okay, battle lines are clearly drawn. Pramod Swami, Rahul Gandhi has said, Rahul Gandhi ने कहा है कि बीजेपी, आपका दल जो है, आपका दल ने बार बार अजमल को अटैक कर रहा है अभी कई दिनों से। जो उनको प्रश्न पूछा गया, जब जर्नलिस्ट ने उनको प्रश्न पूछा कि क्यों अजमल को बीजेपी ने बार बार अटैक कर रहा है, कांग्रेस को लेकिन नहीं, राहुल गांधी जी का जवाब था, उनका रिप्लाई था कि अटैक ऑन अजमल इज अटैक ऑन असम। इसको आप किस तरह से देखते हैं? तो फिर इसका मतलब जो
तरुण गोगोई साहब, स्वर्गीय तरुण गोगोई साहब ने कहा था हुइज बदरुद्दीन, वो भी गलत था। तो ये तो राहुल जी को थोड़ा होमवर्क करना चाहिए था कि उनके ही पूर्व मुख्यमंत्री जो 15 वर्ष रहे, उन्होंने स्वयं कभी तरुण गोगोई से कभी अजमल से समझौता नहीं किया और उन्होंने कहा कि हुइज बदरुद्दीन। तो हमारा कोई बदरुद्दीन साहब से व्यक्तिगत विरोध नहीं है, वो भी एक इंडिविजुअल है, हमारा उनके आइडियोलॉजी से विरोध है। वो आइडियोलॉजी जो आसाम जो समझौते के बाद ये जो आईएमडीटी स्क्रैप हुआ, उसके बाद में बदरुद्दीन साहब की पार्टी का गठन हुआ और ये पार्टी के लोग जिस तरह से जो हमारे जो कल्चर्स है, आसाम का जो कल्चर है, उसके ऊपर में इनके नेताओं के जो बयानबाजी होती है, उससे ये पता चलता है कि ये जो पार्टी है, ये हमारे कल्चर के लिए, हमारी सभ्यता के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए आने वाले समय में एक खतरा है। अब देखिए, अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि अजमल साहब स्वयं एक सभा में कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो 3000 मस्जिदें गिराई जाएंगी। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या 5 साल में हमारे शासन में एक भी मस्जिद गिराई गई? ओके, दूसरी बात प्रमोद स्वामी, मैं आऊंगा आपका पास। डॉक्टर जुड़ी शर्मा बडोलोय, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन, why is your party giving so much of importance? You're saying that the basic attack by the BJP is that you've heard the Prime Minister saying that ये अस्तित्व का सवाल है, जिस दल के साथ कांग्रेस ने अलायंस किया है, that party, meaning the AIUDF, is a threat to the identity of Assam. So this is what you are facing, and he said that attack on Ajmal is an attack on Assam. Don't you think it is crossing the limits? It's going too far. Wasbir ji, I just want to say one thing. Yeah. That Rahul ji has said it, that attack on Ajmal, it's not like the Ajmal as a person. Is that like the communal thing which they have been telling, the BJP has been attacking Ajmal, calling him a communal party or communal person, is an attack on Assam culture, because Assam has always been in a close, affinity with the Muslim and a Hindu. This is the state where Ajan Pir ji is also there, Shankar Dev ji, Guru Shankar Dev is also from this state, this Assam state. So we have always been seeing this Muslim and the Hindu culture together, the Vaishnav and the Muslim culture being together, being flourished in Assam. So when it comes when BJP has been attacking the religion or the culture of the civilizational thing which they are talking about, okay, that's an attack on the culture of Assam, not an attack on a person as such. And we, the Congress, which we have aligned with the AODF, I have always been saying this is a political occasion. We have been with our political party with a grand alliance, because with time we have to see the political scenario as well. We are not calling anybody communal a part of BJP, because the way BJP has been communal about every statement they have been saying, and what Pramod has said rightly, that we have said that there would be nothing called communal when Congress comes into power with the Grand Alliance. But this is the BJP government. When BJP did come into power, their main issue was Babri Masjid. Okay. So we should not forget that their main issue coming to politics was a Muslim. So basically the point Dr. Judy Sharma Butler is making, that that reference to Ajmal is not Ajmal the person as such. But I'll come to, I've got two very well-known commentators on the show. But before that, let me go to Mr. Champak Kalita, who is joining me from Mukalmoa. Champak Kalita is the AIUDF spokesman. He is also now the candidate, AIUDF candidate for the Borkhetri seat. Champak Kalita ji, आपने सुना माननीय प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कांग्रेस का जो मित्र जुट है एआईयूडीएफ, ऐसा दल के साथ उन्होंने अलायंस किया जो कि असम का अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है. सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? बिकॉज अगर आप कांग्रेस का महाजोत में अगर नहीं होते, शायद कांग्रेस इतना क्रिटिसिज्म शायद नहीं फेस करता. देखिए वासबीर जी, our Prime Minister Narendra Modi, as well as star campaigner BJP, he reduced his status himself over visibility. तो हिंदी में कहावत है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम बड़े दर्शन छोटे. ये हाई प्रोफाइल कैंपेन विथ ए कंटेंटलेस कंटेंट जिसमें नहीं है. Come to the point. This type of rhetorics
सवाल का जवाब दीजिए। rhetorics of prime minister, this type of rhetorics of prime minister, he try to owe the people मैंने आपसे सीधा सवाल की थी। cover मैं इसी चंपक कह कलिता रहा जी, हूं, मैंने आपसे उन्होंने सीधा सवाल किया, BJP का आपने देखिए, घुमा फिरा के वाजपेयी क्यों जी, रिप्लाई कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर चंपक ऑफ कलिता इंडिया, जी, डायरेक्ट आंसर प्राइम दीजिए। मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अजमल साहब को, AIUDF को आसाम का खतरा बता के वो अपना जो निकम्मापन है, वो आसाम में जो CAA लेके आया, नोटबंदी किया, अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, आसाम में जो इंडस्ट्री बंद हो गया, आसाम में जो आपका बाढ़ है, आसाम में जो आपका कटाव, इतना जो एक फेलर प्राइम मिनिस्टर है, नोटबंदी है, अनप्लान लॉकडाउन है, ये सारा जो हम लोग का आसामी Okay, कम्युनिटी let's को stick to डिस्टर्ब my किया है question. बीजेपी You are ने, not replying. उसको कवर आउट करने के Okay, लिए Sampath this Kalita, type I of have to- rhetoric I have by our to- prime minister. Okay, I'll come back to you. This is only the opening round. Let me go to Dr. Rajiv Hendik, joining me from Guwahati University. Dr. Rajiv Hendik, how do you look at this? You know, now every BJP leader, senior, junior, big or small, everyone is trying to beat the Congress by taking the name of the AIUDF. They're saying that, as the Prime Minister himself said today, as you have heard, that the Congress, he is saying that allied with a party that is dangerous to the future and identity of Assam. How do you look at this? Champak Kalita of the AIUDF said this is a rhetoric. He wanted to dismiss it as a rhetoric, but this is emerging as the biggest election plank of the BJP. BJP is doing what it does best, that is polarize, communalize, create the Hindu-Muslim divide and garner the votes. If they have been in power for 5 years and they have done enough, as also has been said by them, why are they not talking about development only? I dare say that the Prime Minister doesn't know the history of Assam, and also the ones that writes his script, as he recently said, Lachit Borphukan was a freedom fighter. You know, there has been many faux pas, and he has come to Assam several times, no doubt. And I think election after election speech of his is not actually creating a sort of dent But in let the me, type of rhetoric. let me also tell you, before I come to Dr. Vikas Tripathi, Dr. Rajiv Hendik, today, Mr. Badruddin Ajmal, the chief of the AIUDF, said at a rally that if the Mahajot comes to power, the first thing they are going to do is open the madrasas. Now, you have accused the BJP of polarizing. Other people will accuse even Badruddin Ajmal of polarizing. You see, the communalism feeds on communalism. That is true. Communalism feeds on communalism, and they both actually become stronger. And majoritarian communalism is something else. A minority communalism is something else. I am not going into that. I have a point here. The point Like, is, opening now the of point madrasa is, not a communal point at all. It's totally related to the educational or academic system of the Islamic culture, but it's not a communalism. So I want to say something like opening of madrasa is not at all a communist statement. Even the Grand Alliance can support that. Opening up. I mean, there was madrasa from since the very freedom struggle. So reopening of the madrasa, which BJP has closed out, Champak Kalita, very briefly. Champak Kalita, brief, विस्तार में बताइए, very briefly. आसाम का मदरसा राजीव हेंडिक, hold on. परंपरा है। ये आपका गोपीनाथ बोरदोले से लेके गोगोई तक ने इसको चला के रखा है, और साहब ने मदरसा खोलूंगा बोल के ये बहुत बढ़िया बोला है, और आसाम का शिक्षा व्यवस्था को जो बीजेपी का जो साजिश है, ये साजिश को तोड़ने की बात कहा है. Point noted. Now let me come to you, Dr. Vikas Tripathi. How do you look at this discourse? Do you get a sense that somewhere that the real issues, yes, Mr. Amit Shah on both the occasions, he said that he gave a detailed blueprint. He tried to give a blueprint that, okay, if the BJP is returned to power this time, they are going to deal with Assam's flood problem. But we are not discussing that now. Now the issue is, do you get a sense somewhere that, main issues or real issues are getting drowned, number one. Point number two,
is, that AGP President Atul Bora had told me on this show 2 days ago that the Congress has made the biggest blunder in 70 years by aligning with the AIUDF, basically is meaning that, what the BJP is also talking about. I feel culture has always been at the center of politics in Assam. Whether if you see, and there have been studies, for instance, there have been studies on AIUDF by Dr. Manoj Nath, who is at Dibrugarh University, and in 2011 elections, even Congress had a soft Hindutva politics against Badruddin Ajmal's AIUDF, and there was a polarization that time also. So it's not nothing new. What is new is that Congress has accepted the pragmatic aspects of cultural politics in Assam, where it knows that given the political space which BJP has come to occupy in Upper Assam, it is now in the Borok Valley and Lower Assam where it has to win some seats in alliance with AIUDF. I'll give you one instance why this alliance is is something that can, one never knows whether Congress would come to power or not, but it would be able to have some impact on seats. If you see in the 2019 Lok Sabha, Congress could gain in Upper Assam in Koliabor and Nagaon seats precisely because of the alliance. And if you do assembly segment wise study, so you would see which assembly segments really went with Congress party in both Koliabor as well as Nagaon seat. So it has something with political pragmatism that Congress is going, and Congress is taking a position which it has always been very skeptical about. It is not that this alliance is a natural alliance. Congress and AIUDF are not natural allies. And former Chief Minister Tarun Gogoi had always been very critical about Ajmal Sahab, even after the 2016 elections. Second thing, I just wanted to highlight one particular aspect, about real issues. Yes, one thing is for sure that in Assam, the flood is not being discussed, or the real issues is not being discussed, and because of the reason both the opposition and the government are trying, the government is setting the agenda and the government and the opposition is while trying to defend it, its position. So culture has occupied the center stage. Actually, we have come out with our manifesto today, which was launched by our Rahul Gandhi ji. Here we have kept a particular, point for flood in Assam, where we have actually described it. Obviously, you will all be getting our manifesto, where we have specially mentioned the few scientific measures how we have to take it for controlling. So it is mentioned in the Congress agenda. That is what the Congress spokesperson is saying. I have to go for a break, but Pramod Swamiji, ye bataiye ki I mean, there is a lot of people are asking this question. I was going through the social media. lot of people are asking this question. 2016 में आपने कहा था कि सरायघाट के लास्ट रन है, दिस द लास्ट बैटल ऑफ सरायघाट. तो प्रश्न ये पूछ रहा है लोग कि अभी ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का सवाल कैसे आ गया? इज इट ओनली बिकॉज ऑफ कांग्रेस पार्टी ने एआईयूडीएफ के साथ अलायंस में आ गया? इज इट दैट? अगर नहीं भी आता तो एआईयूडीएफ रहता? नहीं, देखिए अभी इसके पहले जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने एक बात कहा, शायद आप उसको रिपीट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी का जो उत्थान हुआ है बाबरी मस्जिद इश्यू से हुआ है. आज भी उनको बाबरी मस्जिद के याद आ रही है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने मैनिफेस्टो में लिख दें कि अगर हम सरकार बनेंगे तो फिर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आपने बोला, आप जब बीच में बोली तो मैंने, आप सुन लीजिए ना, आप जब नहीं ऐसा डिबेट नहीं होगा. मैं, आप महिला है, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, आप भी एक डिबेट का गरिमा रखिए. आप बोलिए, आप बाद में बोलिएगा, आप बोलिएगा, आप एक प्लीज आप सुन लीजिए, आप मेरा बात सुन लीजिए. आप जब बोले, मैंने नहीं बोला ना, सुन लीजिए, आप बोलिए, आप रिमाइंड करके सुन लीजिएगा, आपने क्या बोला आपको पता चलेगा. तो हमारा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस के ऊपर में आपका जो आज अभी से एआईयूडीएफ का रन चढ़ने लगा है, और इसी बात को हम हाईलाइट कर रहे हैं
कि आज जैसे बदरुद्दीन साहब ने कहा कि हम आते ही पहली कैबिनेट में जो है जो सरकारी अनुदान जो हमने बंद किया है मदरसों को उनको चालू करेंगे। हमारा मदरसों से विरोध नहीं है, हमारा विरोध ये है कि मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही है वो मजहबी शिक्षा सरकारी अनुदान से नहीं दी जा रही। आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत, प्लीज आप बीच में मत बोलिए, आप बोलिएगा। ये पंथनिरपेक्ष देश है, यहाँ सरकारी पैसे से मजहबी शिक्षा नहीं दी जा सकती। आप सुन लीजिए, आप इतना क्यों आप आपको रिक्वेस्ट करता हूं प्रमोद स्वामी, मैं ये कहना चाहूंगा प्रमोद स्वामी, आप आज देखिए आप 3 तलाक ला करके हमने हमारी मुस्लिम बहनों को गरिमा प्रदान की। आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, आज 3 तलाक के नाम में हमारी मुस्लिम बहनों से जो बेइज्जती उनको बेइज्जत किया जा रहा था, तब आपको याद नहीं आया 3 तलाक? आपने क्या किया उसके ऊपर में? तो आपका जो सेकुलरिज्म है ये सीडो I am coming to you, Champak Kalita, immediately after this very short break. Don't go away, viewers. I'll be right back. ओके मैं चंपक कलिता के पास जाना चाहता हूँ। चंपक कलिता जी, यू नो द फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शंस एग्जैक्टली एक सप्ताह बाकी है। 27 मार्च को फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शंस होंगे। 47 सीट्स इसमें है, टी गार्डन बेल्ट है। बोथ बीजेपी एंड कांग्रेस टी गार्डन वोटर्स को अपने तरफ लाने के लिए कोशिश जारी रखा है। माय पॉइंट इज, ये एक आर्गुमेंट ये भी है, ये एक एनालिसिस ये भी चल रहा है कि अगर कांग्रेस ने एआईयूडीएफ के साथ अगर अलायंस नहीं होता तो उनका चांसेस अच्छा होता अपर असम में, क्योंकि अपर असम में इंडिजिनस एथनिक ग्रुप्स है, इंडिजिनस पीपल है और टी गार्डन बेल्ट है, तो उसमें आपका कोई प्रभाव नहीं है। अगर आपके साथ अलायंस नहीं होते तो शायद कांग्रेस का ज़्यादा अच्छा होता। सो दैट इज द आर्गुमेंट। व्हाट इज योर डिफेंस ऑन दैट? देखिए वासबीर जी, मुझे थोड़ा पीछे फिर जाना पड़ेगा। जो अभी दुनिया में नहीं है, तरुण गोगोई जी, स्वर्गीय तरुण गोगोई जी, उन्होंने खुद एडमिट किया है कि मैंने जब बोला था, मैंने जब हुईज बदरुद्दीन बोला था तो वो एमपी नहीं था, एमएलए नहीं था, उसका पार्टी नहीं था, लेकिन मैंने गलती किया हुईज बदरुद्दीन बोल के। हुईज बदरुद्दीन बोलने के बाद 6 में अपर असम में कांग्रेस का वोट घटा है। इसीलिए ये जो हवा खड़ा करने का कोशिश कर रहा है कि बदरुद्दीन अजमल एआईयूडीएफ के साथ अलायंस करने से कांग्रेस का अपर असम में लॉस होगा, ये टोटली गलत साबित होगा। 2 तारीख को कांग्रेस गेन द ग्राउंड। राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी डूइंग वेरी वेल इन अपर असम। ओके, नो, आपका ये कहना है बिकॉज यू आर द स्पोक्समैन ऑफ एआईयूडीएफ। आपका, मैं ये समझा आप जो बोला है, आपका कहना ये है कि कांग्रेस ने एआईयूडीएफ के साथ अलायंस करके उनका अपर असम में चांसेस बढ़ा है। एग्जैक्टली, लेट मी टेक अ रिस्पांस टू दैट। पहले लोगों को लगा था कि बीजेपी को नहीं हरा पाएगा, लेकिन आफ्टर द कांग्रेस एआईयूडीएफ महागठबंधन, ओके, आई विल टेक अ रिस्पांस टू द कांग्रेस, बट let me go to my 2 non-political panelists. I'll come to you, Rajiv Hendik, but let me first go to Dr. Vikas Tripathi. Dr. Vikas Tripathi, that claim by the AIUDF, you have heard, said that, you see, a lot of people are skeptical. A lot of people were thinking that, Congress, first phase, Congress will take a hit because of its alliance with the AIUDF. That is the general impression. But AIUDF spokesman is saying that no, he is saying the reverse is going to happen. What do you think? What is your analysis? Well,
I don't want to get into prediction and all those things because it always remains speculative. Yeah. But Congress strategy essentially doesn't seem to be sweeping the upper Assam. What Congress thinks that if the religious polarization happens in and which is bound to happen in in Borak Valley and Lower Assam, and if it can clinch some of the seats in Upper Assam, it can maintain its hold, and so that is why a lot of hope Congress is pinning on local factors and the factors of candidates. So there are certain constituencies in Upper Assam where Congress seem to have an upper edge, but again one has to take this with a pinch of salt, because from 2014 what we see is that candidates do not matter as much as the party and leadership matter. One weakness of the Congress in Upper Assam has been that it has not been able to project a face from Upper Assam to lead its campaign. Like because if you are really Right. and that is what BJP is hitting upon. One reason why BJP is always, and BJP is not talking about Congress AIUDF alliance only in this election. Even from 2016 onwards, the BJP is projecting that there is a hidden understanding between Congress and AIUDF. So Congress, rather than being defensive, Congress could have been assertive and projected a leader from Upper Assam. Okay, a face leadership from Upper Assam, on this issue. because This is a very interesting point which Dr. Vikas. Sorry, Vikas, Yes, I have to cut you off. Now, this is a very interesting point which Dr. Vikas Tripathi has made, that that Congress may be taking a risk actually with this political alignment. They must be hoping for polarization in the Barak Valley and Lower Assam, and they want to consolidate on that. And they might be taking a risk as far as Upper Assam is concerned. But my question to you, Dr. Rajiv Hendik, do you think this is after a long time, that the Congress has actually been able to stitch up an alliance? Congress has been able to force an alliance after a very long time, and they have managed to do it quite some time before the elections actually this time. Let's give it to them. But do you think that today the Congress must be badly missing a leader like Dr. Himanta Biswa Sharma? Aggressive, absolutely acceptable, mass base, has the capacity to mobilize people. Yeah, I think you are right. You are right in the leadership issue. But then Gaurav Gogoi is making some inroads, it seems. And the passing away of Tarun Gogoi and the alliance that he actually stitched up in a way before he passed away with Badruddin Ajmal, I think that to some extent will dent the amount of polarizing, the campaign that is going on about and demonizing Badruddin Ajmal, all this, vilifying him and all this that is being done, will not be able to cut too much of ice. Actually, there will be some influence, but it will be quite a dampener. And I think one must also understand that Badruddin Ajmal is a Maulana. He has been leading this Jamiat Ulema-e-Hind. I have been telling it repeatedly before. And in 1996, when AGP came to power, which is a very prime ally of BJP now, they took they got the open support. Okay. Of you described. of the You said Rajiv Hendik. You said Maulana. You said Badruddin Ajmal is a Maulana. He is a Maulana. He is a political leader. He is a business tycoon. He wears many hats. He is a philanthropist also. Let me come to you. I just want to come in. Yes, no, because but what I'm very trying to quickly. say, I'm coming to Judy Bodloy and what I'm trying to say is that the amount of damage, this alliance would have caused or had the capacity to cause earlier. I think this time it will not be there. This time it will be not to that extent. That as expected by the BJP, I think it's not going to happen to that extent. Okay, Vikas, yes. Actually, we have to be, if you see the community-wise voting in Assam, now which are the major communities in Upper Assam? Apart from ethnic communities, it is the T tribe which plays a very significant role. So suppose if I were to ask from eminent panelist, I would ask that, do you think a Congress-AIUDF alliance would anyway mark the return of
T-tribe voters, the indigenous voters, and a section of caste Hindu voters that has shifted to BJP from 2016 to and 2019. And it is here that I have some reservations. Now, Congress could have handled this in a more better way by by resolving its leadership crisis. Okay, let's get a response from the Congress spokesperson. Yes, Judy Sharma Butler, would you like to respond to what Vikas has been saying? See, he has points like we are not in alliance with AUDF only. We are in alliance with a lot of other parties like CPM, CPL, then BPF, then no, not BPF. I mean BPF, yes. BPF, yes, BPF, and the missing and the Deori, that political parties. So we are with a lot of political organizations and political parties, Anchalik Ganamancha, and lot many. So here we don't project ourselves as an alliance with only AIUDF. We have a grand alliance with different organizations, different political parties, and now if you see towards Upper Assam, there have been a lot of anti-car movement people who had been totally been betrayed by the BJP-led government as it is BJP. So those people of Assam, they are looking for an alternative, and obviously that alternative is not going to be the regional party, because the regional party has just taken a political stand, and they have come into politics because of the car movement, whereas Congress being a national party, and we have been we have been opposing car as well as we have we are pointing towards the progressive society and the development issues. We have come up with the manifesto with the development issues, which our Tripathi ji has rightly said. Why we are not talking about we will expand on that. We'll expand on that. I'll give an opportunity to Pramod Swamiji to answer both you as well as Champak Kalita. Let me go to you, Champak Kalita. Mr. Champak Kalita, कांग्रेस ने पहले तो आपके साथ अलायंस नहीं किया, इस बार ऐसा लग रहा है लोगों का यही कहना है कि बोथ AODF और कांग्रेस each needs each other, both the parties needs each other this time, और कांग्रेस के यही आशा है कि आपके साथ अलायंस करके उनका अपना जो स्थिति है उसको थोड़ा सा मजबूत करें, क्योंकि आपका कोई चंद कंस्टिट्यूएंसीज है जो जहां आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है काफी दिनों से. सो हाउ डू यू लुक एट दिस? डू यू थिंक इट इज अ मैरेज ऑफ कन्वीनियंस एज फार एज द कांग्रेस इज कंसर्न एंड वाइस वर्सा? देखिए, ये आप इसको अगर खूब ज़्यादा पॉलिटिकली लेके जाएंगे तो आप नंबर्स में कह सकते हैं कि लास्ट टाइम अराउंड 26 सीट वी लूज तो एक दूसरे का लड़ाई के बीच में बीजेपी को मिल गया, लेकिन इट इज़ ए लार्ज सोशल अलायंस, सोशियो पॉलिटिकल अलायंस. कांग्रेस, AIUDF एंड स्पेशली BPF, एक ट्राइबल टेंडेंसी स्टेट में BPF आ जाने के बाद ये जो इतना बड़ा एक सोशियो पॉलिटिकल अलायंस हुआ है, ये आसाम में चलेगा और ये नागपुर RSS ब्रांड बीजेपी को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी था. ओके, प्रमोद स्वामी प्लीज रेस्पॉन्ड. मुझको इनका सेक्युलरिज्म समझ में नहीं आता है. आप कांग्रेस जो है केरला में मुस्लिम लीग से गठबंधन करती है, बंगाल में अब्बास सिद्दीकी जो रेडिकल इस्लामिक ग्रुप से उन्होंने गठबंधन किया है, और आसाम में AIUDF से, फिर भी ये सेक्युलरिज्म की बात करते हैं. अब 2019 के चुनाव में देखिए, बदरुद्दीन साहब ने खुद कहा था कि कांग्रेस ने हमसे धोखाधड़ी की है, और कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में जो सीटें जीती थी वो कोलियाबार, नौगांव, कोलियाबार और बरपेटा, तो जहाँ माइनॉरिटी जो डोमिनेटेड एरिया है वहीं उनको सीटें मिली थी. जहाँ तक का आंदोलन की बात है, का आंदोलन के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ. 2014 में हमारी 60 सीटें थी और 2019 में हमारी 9 सीटें हुई, हमारी 9 सीटें मिली, तो हमें लोगों का समर्थन मिला है. अब दूसरी बात, आज जहां डेवलपमेंट की बात आ रही है, तो मैं बताना चाहूँगा कि 2014-15 में जो GSDP थी आसाम की 1,85,000 करोड़ थी, जो 2019 में बढ़कर के 3.5 लाख करोड़ हो गई. पर कैपिटा इनकम बढ़ी है. कांग्रेस के समय में 60 सालों में सिर्फ 1 पुल और आज 6 पुल. कांग्रेस के समय में 60 सालों में 6 मेडिकल, आज 6 मेडिकल और एम्स, तो डेवलप और 20,000 किलोमीटर रास्ता, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम हुआ है. अब यहाँ ये कि एक वैचारिक लड़ाई है. हम जिस सेक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं वो सेक्युलरिज्म है सबका साथ, सबका विकास
और सबका विश्वास, Okay. जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन, और इनका सेकुलरिज्म है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपीजमेंट करने का सेकुलरिज्म। अब जनता तय करेगी इस पे। ओके, जनता जरूर तय करेगी इस पे। लास्ट, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आई विल टेक द फाइनल कमेंट्स फ्रॉम ईच ऑफ माय पैनलिस्ट। लेट मी फर्स्ट गो टू यू, डॉक्टर Judy from Abordale. See, what our, my beloved friend from BJP has said, their answer is the price rise. Their answer of Sabka Vikas, Sabka Saath is the basic answer is price rise of the common people, which the common people are facing, and the price rise of the LPG gas cylinders, which I don't have to say, like Sabka Vikas, Sabka Saath, तो फिर कैसे ये मूल्य वृद्धि हो रहा है और कैसे इकोनॉमी सफ़र कर रही है, कैसे हमारी बेरोजगारी बढ़ रही है और कैसे इस देश में महिलाओं की सुरक्षा पे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। एंड आई एम आस्किंग हाउ कम असम बिकेम द नंबर 1 ऑफ द हाईएस्ट क्राइम of against women in India, which is a recorded statistic. So I want to just question the government, where are their actual answers towards unemployment, price rise and the security thing. I'm not going to answer them what we have not done in 60 years. What they have done in 5 years is always been on the foundation of the 60-year development, not and the 15 Okay, years that's a measure charge. Let me go to Champak Kalita. Champak Kalita जी, आप खुद अभी उम्मीदवार है, बरखेत्री से आप लड़ रहे हैं, एकदम शॉर्ट में बताइए क्या क्या इशू आप रेज कर रहे हैं। लास्ट वर्ड्स, आई एम 20 seconds to you. मेरा टोटल बरखेत्री का इशू है अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ मुझे अगला 5-7 साल में ऐसा कुछ करना है या यहाँ करने की उम्मीद है और यहाँ उसका जगह भी है कि कम से कम आपका 15-20 हज़ार लोगों को यहाँ संस्थापन दे सके। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बहुत बड़ा है बरखेत्री में, इसको हम सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे, प्लान करेंगे, विजन रखेंगे लोगों के पास में। Okay, 1-point agenda to solve unemployment. Rajiv Hendik, what is your final comment? How do you see the first phase of elections going? What would you like to say? What is your assessment? Yeah, I think we are in for a very, very interesting fight. It's true the Congress cannot match the resources of BJP. They are, they have it in plenty. Organizationally, the strength of INC, Indian National Congress, is there. But again, I think BJP's strength is more drawn from RSS and its affiliates. But I think this time Congress has been a bit clever. They have come up with 5 guarantees. I think the song, the campaign song that they have come up with is also, it's quite peppy. IT cell of theirs, I think, is also working. But most importantly, what I feel is that some of the central government schemes, some of the central government, actions and decisions, I think they are giving them a shot in the arm in the form of, the privatization that is going on, the ongoing, agricultural, the strike, agriculturalist, they are in the farmers' strike, which is going on, you may say FDI in LIC, all these issues, I think it may have if of course the Congress can use them well, they will help them definitely. We'll have to against the we'll have to wait and watch. Dr. Vikas Tripathi, your final comments. We have heard about technological warfare, but now from what we have been seeing and that comment made by Rajiv Hendik, that he's talked about the song, he has talked about the IT cell and so on. I think we have already we have already seen a massive technological, or I would say, should I say, IT warfare as far as the elections are concerned. Final comments. I think there is no doubt that this would be one of the most polarized elections in the history of Assam, and a lot would depend upon Congress' ability to mark the return of T-tribe voters, apart from denting the caste Hindu votes and the indigenous votes. I would also want to say that, look here, in this election, BJP is not talking about Jati, Mati and Bheti. It is clearly talking about civilization, which is about cultivating a majority, because if you see the politics of Bodoland, for instance, that election was the most crucial, and that happens to catch the glimpse of
all what was to take place, because there is Boro community, and if you have to cultivate a majority in the Boro land, you have to bring in the Boros and the Aboros, and that is where whole civilization war becomes very crucial. So it all depends, and it is precisely for this reason that the 47 seats that goes for polling in Upper Assam are the most crucial seats, because the rest polarized seats are decided. 47 seats, very, very critical, where the tea garden votes comprise a sizable chunk. 80 lakh voters are to cast their votes for the first phase of polling next Saturday out of the 2.34 crore voters in the state. That is quite a lot. And we'll have to wait and watch, because the BJP and its allies had won 35 seats last time, and their party is quite confident. And as Dr. Vikas Tripathi says, a lot will depend whether they will be able to halt the BJP march will depend on the Congress's ability to get back some of the lost tea garden support base. We'll have to wait and watch. At the end of the day, voter is king. I thank all my panelists for participating in the program and the viewers for watching the show. Good night and goodbye.